Hello viewers, let's learn the topic mensuration, which is very important for the students of class 8 as the topic is carried in classes 9 and 10 also. This video will also be helpful for the students of classes 9 and 10 as it will be a recap for them, or they can learn the things which they are not knowing. So let's start with the topic. First of all, what is mensuration? Meaning, what is the meaning of this word mensuration? So some students give answer as it is perimeter, it is area, but that's not the correct meaning. Mensuration meaning measurement. Right? Now let's see what does it measures. First of all, what is perimeter? So this you have learnt in your classes 6 and 7 also. So perimeter is the distance around a closed figure. So any figure which is closed we can find its perimeter. ठीक है, तो उसकी boundary पे जब हम move करेंगे then we will calculate the perimeter. Let's see now. So for perimeter now there are two type of shapes, 2D shapes and 3D shapes. So 2D shapes you have covered in your previous classes, which includes your circle, rectangle, square and many more. So we will be covering this topic mensuration in two parts. This video will be the first part of that, and the second part of the video I'll discuss with you the difference between 2D and 3D shapes. So let's see this now. This you have done in your previous classes also. First of all, triangle. Triangle shape you can see here. So triangle may we have scalene triangle, isosceles triangle, equilateral triangle, right? So perimeter means distance around a closed figure. So this closed figure is triangle here. तो इसके साइड्स को जब हम ऐड करेंगे, हेयर a इज रिटन, c इज रिटन, b इज रिटन, इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे a प्लस b प्लस c, दिस इज द पेरीमीटर. ठीक है, सपोज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल. सो इफ आई टेक वन साइड एज a, इट विल बी a प्लस a, so we can write it 3a. So that's why perimeter for equilateral triangle is 3 multiplied by side, right? Next is a square. Square has all four sides equal, although in this figure should be like that. Okay. So perimeter is 4 into side. It is actually the sum of all four sides. Side plus side plus side plus side, which gives you 4 into side, right? Next is rectangle. Rectangle, this is length, this is breadth. So this will also be length because opposite sides of rectangle are equal, and this will also be breadth, right? This will be breadth. So when we will add all the sides, what it will be? It will be L plus B plus B, which is 2L plus 2B. Taking out 2 common gives you the formula for perimeter of rectangle, which is 2 into length plus breadth. So these things we have done in your previous classes. Okay, next shape is pentagon. So pentagon is a polygon having 5 sides. All 5 sides are equal. So if we take one side as a, so 5 times if I add this a, it will give me the formula 5 into side. So this is the formula for calculating perimeter of pentagon. Next is circle. For circle also you have done in your class 7. So circle is a, you can see perimeter circle का हम उसको specially we name this as circumference, right? So formula for circumference of circle is 2 pi r, where r is the radius of the circle. ठीक है, let's learn now something about this pi. Now what is pi? इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या देते हैं? That it is 22 by 7 or 3.1, है ना? So this is not the answer for this. These are the values which we use in our calculations. ठीक है, so let's see now what is pi. Actually it is the ratio of circumference of circle to its diameter. So how does this come? How this value 22 by 7 comes? How this is 3.14, and why this is ratio of circumference of circle to its diameter? We will learn now.
see the value of pi, it can be calculated with the help of a simple activity. So we will follow the following steps to calculate the value of pi. So it is the ratio of circumference of circle to its diameter. ठीक है, so करना क्या है हमने, let's see now. Step 1 is you just draw a circle of diameter 1 unit. एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका डायमीटर 1 यूनिट ले लिया, मतलब रेडियस आपने 0.5 यूनिट्स ली. इसके बाद आपने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है और उस सर्कल के अराउंड उसके बॉर्डर पे प्लेस कर देना है. मतलब सर्कल के एक पॉइंट से उसको स्टार्ट किया, सर्कल कंप्लीट करके वी आर रीचिंग द सेम पॉइंट. एक बार ही वो सर्कल उस थ्रेड से कवर होना चाहिए, राइट. दिस इज योर स्टेप 2. स्टेप 3 इज टू प्लेस द थ्रेड ऑन द रूलर एंड नोट द लेंथ. आपने एक बार उसको सर्कल के अराउंड रैप करके लेंथ देख ली उसकी कितनी आई है. देन ओपन दैट थ्रेड एंड प्लेस इट अलॉन्ग द रूलर टू मेजर कि वो कितना आ रहा है, कितने सेंटीमीटर्स वो आ रहा है. ठीक है, सो दीज आर द 3 स्टेप्स आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका डायमीटर 1 यूनिट लिया. देन आपने एक थ्रेड लिया और उस सर्कल के अराउंड उसको घुमा दिया. ठीक है, देन आपने उस थ्रेड को ओपन किया, उसको एक रूलर के अराउंड प्लेस किया और उसकी मेजरमेंट को लिया. लेट्स सी नाउ, सी दिस फिगर. हमने सर्कल लिया था जिसका डायमीटर था 1 यूनिट. ये हमने नेक्स्ट फिगर में थ्रेड लेके उसके ऑल अराउंड रैप कर दिया. ठीक है, सपोज इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसको थ्रेड को रैप करना, तो वी आर मूविंग लाइक दिस एंड वी आर रीचिंग हेयर टिल हेयर, राइट. उसके बाद हमने इस थ्रेड को लेके ये सर्कल रूलर के स्केल के ऊपर हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया. सो दिस इज गिविंग अस दिस मेजरमेंट एज 3.1 सेंटीमीटर्स. यू कैन सी इन द फिगर. ठीक है, तो डायमीटर था 1 यूनिट, सर्कमफ्रेंस थी 3.1 यूनिट्स. तो पाई के लिए मैंने आपको बताया था इट इज़ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, राइट. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज नाउ. सर्कमफ्रेंस हमने कैलकुलेट किया 3.1 एंड डायमीटर वी हैव कैलकुलेटेड एज 1, which is giving you the answer of pi as 3.1, right. Let's perform the same activity with different measurements. Now we have drawn a circle जिसका diameter है 2 units, मतलब radius है 1 unit. ठीक है, फिर same way we have taken a thread और suppose उसको इस point से हमने place करना start किया, तो उसको पूरा circle complete करके we are reaching the same point again. फिर इस थ्रेड को ओपन किया और उसको रूलर के लॉन्ग प्लेस किया, विच इज गिविंग द मेजरमेंट एज 6.2 यूनिट्स. ठीक है, सो डायमीटर 2 यूनिट्स और जो थ्रेड की लेंथ आई दैट इज 6.2 यूनिट्स, तो वही सर्कमफ्रेंस बनी सर्कल की. सो पाई क्या था, पाई सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो 6.2 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 3.1. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व थ्रू दिस एक्टिविटी इज even if we are increasing the diameters, accordingly the circumference is increasing, but the value of pi is coming out to be same, which is 3.1. So that's why pi is a constant. And you can see after decimal यहाँ पे हमने एक ही डिजिट लिया है, 0.1 लिया है ना, 3.1 वैल्यू है. So pi की वैल्यू कभी भी ये ख़त्म नहीं होती है, it never finishes, right. आप इस 6.2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3.1 जो लिखा गया है ये डेसिमल के बाद जस्ट एक प्लेस ली है, अदरवाइज इट विल नेवर टर्मिनेट. उसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, राइट. इट विल गो ऑन. दैट्स वाई इट्स एन इररेशनल नंबर. पाई इज एन इररेशनल नंबर, तो इसकी वैल्यू कभी फिनिश नहीं होती है. सो फॉर अप्रॉक्सीमेशन पर्पज पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम 3.14 लेते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली इट इज 22/7 वी आर यूजिंग फॉर आवर कैलकुलेशंस, राइट. तो पाई क्या होता है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, जिसकी हम कोई भी वैल्यू ले, लेकिन जब हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं देन इट इज कमिंग आउट टू बी सेम. इसलिए पाई एक कांस्टेंट है जिसको हमने एक फिक्स वैल्यू दी हुई है, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 एंड 22/7. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ. नेक्स्ट इज व्हाट इज एरिया. सो एरिया क्या है, इट इज द रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज फिगर. जैसे ट्राइंगल के केस में जब हमने पेरीमीटर देखा था तब हमने इन तीनों साइड्स की आउटर बाउंड्री को सिर्फ ऐड किया था. जब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया देन वी विल बी सीइंग दिस, यू कैन सी दिस येलो पोर्शन, दिस होल येलो पोर्शन, ये क्या है, कितना है. सो दैट विल बी योर एरिया, राइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 7. फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, where b is your base and h is your height, right.
So in case of equilateral triangle, there is one special formula. For equilateral triangle, formula is √3/4 side square, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में. दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज, राइट. नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है एरिया का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट. यहाँ पे लेंथ क्या है, विड्थ ली हुई है w इंटू एच. स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल हैं, एरिया बन गया साइड स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर. देन पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट. सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर. Let's see now why area of circle is pi r square. For this also we can perform one activity to learn how this is pi r square. See, we have taken one circle here. Then we are dividing this circle into 4 equal parts. You can see blue, green, yellow and this peach color. Right? Now when we are dividing this circle into 4 equal parts, we are getting 4 triangles. Let's place these triangles this way. ठीक है, एक ट्राइंगल ये प्लेस करी, दूसरी इन्वर्टेड प्लेस करी, फिर एक ट्राइंगल प्लेस करी, दूसरी इन्वर्टेड प्लेस करी. You can see now the shape which we are getting, it's almost the shape of a parallelogram, right? Now again we are taking the same circle, but what we are doing is we are increasing the number of parts. ठीक है, you can see यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ही parts थे, है ना. और यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 parts we have done. अब 16 पार्ट्स करने से जो हमारे पास 16 ट्राइंगल्स आई हैं, वी आर प्लेसिंग देम सेम वे. लाइक एक को इन्वर्टेड प्लेस किया, एक को इरेक्ट प्लेस किया, देन इन्वर्टेड, देन इन्वर्टेड इरेक्ट. ठीक है, सो दिस वे व्हेन वी आर प्लेसिंग, तो पैरेललोग्राम की शेप से वी आर अप्रोचिंग टू द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट. तो इसका मतलब अगर हम इसके और ज़्यादा पार्ट्स करें तो we will get exactly the shape of a rectangle, right? Now to calculate this area of circle, what we can do, we can calculate the area of rectangle as we have placed these triangles in the shape of a rectangle. So you know already the formula for area of rectangle is length into breadth, right? Let's see now how we can see the breadth and length of this rectangle. You just observe one part of this, ठीक है. Let's I'm taking this triangle number 2 which is blue in color. आप इस part को observe करो, this thing, right? जो ये part है, this is same as this, right? So what it was the radius of the circle. So it means ये चीज़ क्या है, ये radius है circle की. Same way ये क्या है, this is also radius, this is also radius, this is also radius. These all lengths are, these are all radius, right? So this is radius. Let's learn now how this is pi r. ठीक है, आपको ये पता है कि पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 pi r, right? अब आप ऑब्जर्व करो कि when we have placed these triangles, one inverted and one erect, ठीक है, तब जो ट्राइंगल्स की जो लेंथ आ रही है, आप देखो कितनी ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. 16 ट्राइंगल्स में से एग्जैक्टली 8 ट्राइंगल्स हमें ये लेंथ दे रही हैं, राइट. तो 16 का हाफ वेट होता है, तो इट मीन्स 2 पाई आर का हाफ करेंगे विच इज पाई आर. मीन्स दिस लेंथ इज पाई आर. So length is pi r, breadth is r. That's why area of rectangle is pi r square. और रेक्टेंगुलर जो शेप आई थी वो कहाँ से आई थी, वो सर्कल से आई थी, तो इसलिए इस सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर. दैट्स व्हाई दिस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो यू हैव done this formula in class 7 that area of circle is pi r square, but why it is pi r square, that I have explained. And even you will be using this area of circle as pi r square in your classes 9 and 10 also, so you must know how it comes. I hope it will be clear to you. Next is trapezium. This is introduced in class 8. You have not done this till class 7. So let's see now
how we can calculate the area of trapezium. Trapezium की थोड़ी सी introduction you have done in your chapter understanding quadrilaterals, right? तो trapezium क्या है? It is a type of quadrilateral. Quadrilateral means any closed polygon having 4 sides. ठीक है? So quadrilateral is any closed figure having 4 sides, the polygon having 4 sides. तो quadrilateral के अंदर we have rectangle, we have square, we have rhombus, kite, parallelogram and this trapezium, right? तो ये सारे quadrilaterals हैं having some special properties, that's why their names are different, right? So trapezium की क्या special property है? Trapezium is a quadrilateral having one pair of parallel sides and one pair of non-parallel sides, right? So if you observe this trapezium PQRS, you can clearly observe that PQ here is parallel to RS. ठीक है, मतलब ये दो साइड्स जिसको B और A नेम किया हुआ है, these are parallel, A is parallel to B, और जो ये दो साइड्स हैं PS and RQ, these are non-parallel sides, right? So what is the formula for calculating area of trapezium? Area of trapezium formula is half into sum of parallel sides into height, right? So according to this figure, parallel sides क्या हैं? PQ and RS, तो इनका sum किया, height इसको हमने denote किया हुआ है small h से, so this is h, this is the formula, right? So this is not necessary कि आपको trapezium इसी shape में दिखाई दे. See, this is also a trapezium. यहाँ पे ये दो sides parallel हैं, ठीक है? These two are non-parallel, right? This is also a trapezium, ठीक है? ये दो sides parallel हैं, ये non-parallel है. So depends on the figure. आपको क्या identify करना है? एक pair parallel sides का होना चाहिए, एक non-parallel sides का होना चाहिए. Let's learn now how this formula comes. Formula is this, you will be using this in calculating your areas. ठीक है, तो जो आप calculations करोगे, sometimes तो values of sides are given to you and height is also given. आप उसमें values put करोगे and you will get the answer for area of trapezium. ठीक है, तो sometimes the question is like that कि आपको area given है और एक side given है, दूसरी side given नहीं है और height given है. ठीक है, so you can let that side be x, do the calculations and find out the unknown. Sometimes the parallel sides might be given to you in terms of ratio, right? कि parallel sides are in the ratio 1:2, ठीक है? So आप sides को तब x और 2x assume करके उनको add करके you can do the calculations, right? So let's learn now in the next slide that how we will calculate the formula for area of trapezium. How area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. Okay, so you can see here the trapezium PQRS in which PQ is parallel to RS, right? So you can see here I am naming this as A, this as B, ठीक है? So this PA is height, this QB is also height, which is same. तो इस trapezium के तीन parts हैं जिसमें number 1 triangle, number 2 triangle, 2 triangles are there and this third shape is rectangle, right? So if I want to calculate this area of trapezium, I will calculate the area of these two triangles and this rectangle. इन तीनों को अगर हम add करेंगे तो we will get the area of trapezium. So let's start with the working now. Area of trapezium here will be area of triangle 1 plus area of triangle 2 plus area of rectangle. Right, now you know area of triangle, it is half into base into height. ठीक है, so triangle 1 के लिए I am assuming this length AS as x and this length BR as y, right? So area of triangle will be half
into base यहाँ पे क्या होगा as, I'm writing as first, then I'll put the value later in the next step. Half into as और height क्या होगी AP, you can see in the figure, plus area of triangle 2, it will be half, base is BR, height is BQ, plus area of rectangle, which is length into breadth, length is AB, breadth is AP. Let's put the values now. It's half into AS length को हमने x assume किया है, AP मतलब height of trapezium, we are denoting it with small h, plus half into BR को assume किया है y and BQ is also h, plus AB length को according to AB length, बेटा जो ये length A given है, it is not only AB, this is entirely length RS, right? So we can write this AB as B. देखो यहाँ पे जो PQ represent किया, PQ is same as AB, right? So this is B into AP length again H, right? Let's solve this now. From these two, I'm taking common. What is common here? Half and H. So what we are getting inside bracket, x plus y plus this is BH. Now observe this x plus y. ये x है, ये y है, right? ये x plus y कैसे आ सकता है? If from this whole length A, I subtract this AB, right? मतलब SR में से if we subtract AB, क्या आएगा? x plus y आएगा. तो SR पूरी लेंथ को क्या लिखा गया है? A, और लेंथ AB को क्या लिया गया है? B, right? So it means instead of x plus y, I can put the value as A minus B. Now opening up the brackets again, it's half AH minus half BH plus BH, half AH. Simplify these two things, taking the LCM. This is actually 1 BH. 1 BH में से half BH minus करेंगे, क्या रह जाएगा? Half BH. Taking out half common, we are getting A plus B and H is also common. So this was the formula, which is half into sum of parallel sides into height, right? So that's why the area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. Hope this will be clear to you, and in your mind it will be there that how this formula comes, right? So that's all for this video. Next we will continue in part 2 of this video. Thank you. Like my channel and subscribe it for more such videos. Thank you.